Hi guys, welcome to Hamena series. The first chapter that I'm addressing is your bills of exchange, right? This is going to give us 10 marks. Now, in Hamena series, I'll be discussing all the wow points of the chapter. So wow points में सबसे पहला point आता है after date after site. Now, what is this after date and after site? Why acceptance? If the problem says 3 months after date, 3 months after date means 3 months after date of drawing the bill. But if the problem says 3 months after sight means from the date of acceptance of the bill. Sir, what are you talking? Date of drawing the bill and date of acceptance is mostly the same. Mostly the same, no problem. If it is not same, we are addressing that only. If the bill is drawn on 1st of March, it is accepted on 3rd of March. It becomes a valid bill of exchange always on 3rd March. Means in the books of drawer as well as in the books of drawing, you will pass the entry on 3rd March only, not on 1st March. 1st March, it was just a draft, had no value. Now, if I have written as a drawer that 3 months after date, I have written this on which date? 1st March. So I will start counting the due date from 1st March, although it became a valid bill of exchange on 3rd March. That's why you have to hammer it in your mind. If it is after date, you start counting the due date from date of drawing. If it is after sight means after drawing you will see. That is nothing but date of acceptance. So you will start counting the due date from date of acceptance. In any case, it becomes a valid bill of exchange not on date of drawing but on date of acceptance. Is that very loud and clear to all of you? Now, regarding due date calculation, there are two things. एक होता है नॉर्मल ड्यू डेट, दूसरा होता है लीगली हम उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट, राइट? When we sit and calculate due date, only we just have to add the bill period. But if you're talking about legal due date as per Negotiable Instrument Act, then bill period तो you will add only, plus you will add 3 days of grace. अब ये 3 days of grace ऐड करने के बाद जो मिलता है वो है लीगल ड्यू डेट. Okay, if that legal due date unfortunately falls on a public holiday, then it is always 1 day before. And if that comes on an emergency declared holiday, right? Then it is always 1 day. Keep this in mind. Recognize public holiday अगर आपका लीगल ड्यू डेट तो एक दिन पहले, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक हॉलिडे नहीं था बट इमरजेंसीली डिक्लेयर्ड हॉलिडे हो गया after adding 3 days of grace, then it cannot be that day, no, and it cannot be 1 day before, so it is always 1 day later. सर वो इमरजेंसी 4 दिन चली तो 5वां दिन, सर वो इमरजेंसी 10 दिन चली तो 11वां दिन. I think I'm clear and thorough with due date and related points. Okay. Now, I'll tell you something very tricky.
हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4. रोमन 1 is when the bill is retained by the drawer himself till the due date. He only goes to drawee and collects the money. I am talking about when the bills are honored, what entries we will pass in the books of drawer as well as drawee, and what is the trick involved in that. See, for drawee, once the bill is honored, bills payable account must get cancelled because he is paying, he is no more liable to pay. So bills payable account will be debited and he is making the payment, so it will be credited to cash or bank account. एक बार bill honor हो गया तो you will always pass this entry. तेल लगाने गया, whether it is Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. That Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4 are the options for drawer, not for drawee. For drawee, honoring of the bill means cancellation of bills payable account because that represents amount still payable which is no longer payable as I have already paid. So my entry always is going to be bills payable account डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. आज के बाद कभी भी लाइफ में कंफ्यूज होने नहीं है, कभी नहीं. बिल ऑनर हुआ ना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग वी विल ऑलवेज पास द बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एनी क्वेश्चंस? नो. फॉर ड्रॉर, in case of Roman 1, you must know the bills receivable is with who. So in case of Roman 1, the bills receivable is with drawer himself. So he will go and he will collect money. So cash or bank account debit. And he has received the money. So it is no longer receivable against that bills receivable. So we will credit bills receivable account. Yes or no? In case of Roman 2, you better understand the bill was discounted with the bank. We have taken short-term loan from the bank against bills receivable. We have already got our money after bank deducts the discount charges, interest charged by bank. So on the legal due date, bank will go and collect money from drawee, not on my behalf here, for them. So why should I pass any entry? Because drawee is making the payment is what we are discussing. So I will not pass any entry. In short, मेरे पास bills receivable नहीं है, मैं जाके पैसे कलेक्ट करने वाला नहीं हूं, मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले नहीं है. Why should I pass the entry? Exactly same logic in case of Roman 3. That is when the bill is endorsed to who? Endorsee. My creditor will go to my drawee. He will collect the money. Why should I pass any entry? I am not involved. The bill receivable is with endorsee. Roman 2 में the bills receivable is with bank. Bank collected the money for themselves. In case of Roman 3, endorsee will collect the money for himself. So I will not pass the entry. In case of Roman 4, the bill was sent to the bank for collection. So bank went to drawee to collect the money, not for themselves, but on my behalf, on drawer's behalf. So bank will collect the money because we are talking about honoring of the bill and put the money in whose account? My bank account. So bank account will be debited. I will credit bills for collection account which I had debited when I had sent the bill, because now I have collected the money. It is no more receivable as it is collected on the legal due date. सो रोमन 1 में हम एंट्री पास करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे आते हैं. रोमन 4 में भी हम एंट्री पास करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे आते हैं. रोमन 2 और रोमन 3 में हमारे पास पैसे ही नहीं आते, वो बिल हमारा है ही नहीं. बैंक कलेक्ट करती है उनके लिए, एंडोर्सी कलेक्ट करता है उनके लिए यानी खुद के लिए. एंड द रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 आर द ऑप्शंस फॉर ड्रॉअर, नॉट फॉर ड्रॉई. सो ड्रॉई के लिए बिल ऑनर हो गया, एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल गेट्स कैंसिल एंड रोकड़ा इज गोइंग आउट. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एम आई वेरी क्लियर? सर इधर भी कुछ ट्रिक होगा आपका? हाँ. फॉर ड्रॉई, bills payable account must get cancelled because amount is no longer payable against this bill as he has dishonored. This will be bill amount. If the party who came with the bills receivable has gone to the notary to note down the fact of bill being dishonored by drawee, then he will land up paying noting charges initially, but it is always going to be expenditure of drawee because it is drawee's fault that he has not fulfilled the promise of making the payment on the legal due date.
So noting charges are never paid by drawee to the notary, but it is always expenditure of drawee. So I will have to debit noting charges account, of course, provided they have given us information. This is noting charges. 2. I am liable to pay back to drawer. So to drawer's account, bill amount plus noting charges. This is going to be the final entry in the books of drawing. कुछ भी हो जाए, Roman 1 or Roman 2 or Roman 3 or Roman 4. Sometime noting charges will be there, sometime noting charges will not be there. Depends upon the situation. जैसे कि on the legal due date bill dishonor हुआ, तो it is right of the drawer to go and note down the facts so that कल को अगर उसको कोर्ट में जाके झगड़ा करना है तो he has a proof that the bill was dishonored by drawee. Correct? So it becomes easy for him. Otherwise the journey may start के bill honor हुआ कि नहीं हुआ, ये तो dishonor हुआ है, उसका fact भी noted है with notary. But ultimately, it is my choice. If I don't want to exercise my right of going to the notary and note down the fact of bill being dishonored, there will be noting charges. So noting charges is not compulsory. ठीक है? You will be given instructions. I am talking about Roman 1 and the dishonor entry. Roman 1 and the bill was with me. Correct? So I went to drawee refused to make the payment. So सबसे पहले, whether I understand the chapter or not, एक चीज पक्का है. Drawer will say drawee's account debit. By what? Bill amount plus what? Noting charges. जैसे हमेशा drawee क्या बोलेगा? Amount is payable to drawer. हाँ या ना? Drawer will always say amount is receivable from drawee. 2. Bills receivable account, because that bills receivable gets cancelled, which up till now I had with me, and I used to think that I'm going to receive money against this bill, but that bill gets cancelled, so it is no longer receivable, and I will be the person who will be going to the notary and note down the complaint in case if I have made so. I will pay to the notary noting charges, so to cash account noting charges. In case of Roman 2, I will always say drawee's account debit. क्यों? क्या क्यों? उसने bill honor नहीं किया, bank will deduct from my account bill amount plus noting charges. So I will say it is receivable from drawee and paid to bank. So this is going to be bill amount plus noting charges. In case of Roman 3, it will be with endor C. So as a drawer, I will say amount is receivable from drawee, bill amount plus noting charges. And 2, बोलो, endor C's account bill amount plus noting charges. ठीक है? So practically बैंक हो या एंडोर्सी हो, बैंक को हमने पे कर दिया क्योंकि हमारा पैसा बैंक में था. एंडोर्सी को वी आर लायबल टू पे, वी मीन्स एज अ ड्रॉ, so we will credit endorsee's account. In case of Roman 4, also drawer will say drawee's account debit because पैसा हमेशा रिसीवेबल है drawee से. बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. वो जो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया तो उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा बिकॉज अभी उसके सामने पैसे नहीं मिलने वाले बिकॉज बैंक हैज नॉट मैनेज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम drawee.
Bills for collection account will get cancelled by bill amount, and bank will complete the formality of noting down the complaint. So they will deduct from our account what? Noting charges. मैं आपके लिए एकदम मैकेनिकली बना भी नहीं सकता और बनाऊंगा भी नहीं, बट वन थिंग यू बेटर अंडरस्टैंड, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई वेदर बिल इज ऑनर्ड और डिसऑनर्ड, वन थिंग इज श्योर, बिल्स पेबल अकाउंट गेट्स कैंसल्ड. If it is honored, you are paid, so credit cash and bank. If it is not ordered, you are liable to pay back to drawer. आपका बैंक एंडोर्सी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन ड्रॉर के साथ, तो you are liable to pay to drawer. Extra amount that may come and will be debited in your books as drawee is noting charges, because that's your expenditure. Noting charges will be always paid by the drawer to notary, bank to notary, by endorsee to notary, but it is always the expenditure of drawee. Now I am in the books of ऑनरिंग में आपको समझना है, सिर्फ दो जगह पे आप एंट्री पास करेंगे, रोमन 4 एंड रोमन 4. रोमन 1 क्योंकि आप खुद जा रहे हैं और ड्रॉई से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल. सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. In case of Roman 2, when the bill was discounted by you with the bank, bank went to the drawee and bank will collect the money from drawee, not for us but for them. So why should I pass any entry? मैंने तो लोन ले लिया था, उसका इंटरेस्ट भी पे किया था. In case of Roman 3, that is when the bill was endorsed to the endorsee, my endorsee will go and collect the money from drawee, for which why should I pass any entry? मैंने तो उसके अकाउंट को, पेएबल अकाउंट को कैंसिल किया था जब बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, उसने जाके पैसे कलेक्ट कर लिए. I am not affected, so I am not going to pass that. So the trick for you to remember is, in case of Roman 2, the bill was with the bank, bank will pass the entry. In case of Roman 3, the bill was with endorsee, endorsee will pass the entry. We will not pass any entry. In case of Roman 4, तुम बोलोगे सर the bill was with the bank. एक मिनट, the bill was with the bank for what? To collect it on our behalf. So bank will collect the money not for themselves. Bank will collect the money for us. Therefore, we will pass the entry bank account debit to bills for collection account. This is in case of happy ending, honoring. In case of dishonoring, again in the books of drawee, bills payable account gets cancelled. Noting charges is his expenditure and he is liable to pay to drawer bill amount plus noting charges. अब डिसऑन, तो सबसे पहले एक चीज समझ लेना, चारों पॉसिबिलिटीज में ड्रॉर को एंट्री पास करना पड़ेगा. एंड वेदर यू अंडरस्टैंड द चैप्टर और नॉट, जैसे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हर बार ड्रॉर के अकाउंट को क्रिएट किया ड्रॉई के बुक्स में, बिकॉज ड्रॉई विल बी लायबल टू पे बैक टू ड्रॉर. एग्जैक्टली सेम वे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर यू विल ऑलवेज डेबिट ड्रॉइज अकाउंट वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट. नाउ इफ द बिल वाज विद द बैंक, डिस्काउंटेड विद द बैंक, यू क्रेडिट बैंक अकाउंट. If the bill was with endorsee, you credit endorsee's account. If the bill was sent to the bank for collection, you credit bills for collection account. उसके सिवा क्या होगा तो नोटिंग चार्जेस होंगे. तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए. If the bill was discounted with the bank, bank will not deduct only bill amount but bill amount plus noting charges. If the bill was with endorsee, you will not be liable to pay to endorsee only bill amount but bill amount plus noting charges. And if the bill was sent to the bank for collection, बैंक पेड नोटिंग चार्जेस. सो सिर्फ बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट कैंसिल करके नहीं चलेगा, वी विल हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट बाय नोटिंग चार्जेस. गॉट इट? दीज आर ऑनर एंड डिसऑनर एंट्रीज. गॉट इट? आर यू विथ मी? नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, that irritates students is something called bill gets renewal of a bill and retirement of a bill. पहले तो तुम समझ लो, बिल रिन्यू हो गया यानी पहले वाला बिल कैंसल हो गया और हमने नया बिल बना दिया. Now when will you cancel the bill? When will you say bill is cancelled? देखो, ड्रॉर एंड ड्रॉई का ऑब्वियसली बिजनेस रिलेशनशिप है. दे ट्रस्ट ईच अदर, दे हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दे ट्रस्ट ईच अदर, दे हैव बिजनेस रिलेशनशिप, दे आर डेटर क्रेडिटर्स, बट स्टिल दे नो ईच अदर.
So agar drawee knows before the due date that he is not going to honor the bill, then sometimes he may go and tell the drawer before the due date only that भैया हम ये बिल कैंसिल करते हैं बिकॉज मेरे पास ऑन द लीगल ड्यू डेट पैसे होने वाले and I want further 1 month or 15 days or 2 months. So I can arrange the money and repay you. So it is not only cancellation of a bill, but it is also making a new bill. So two things. One is cancellation of the bill and second is making a new bill. There are two things that we need to understand. I repeat again, renewal of a bill means cancel the old bill before the legal due date and make a new bill immediately with new terms and conditions. Second point, retirement of a bill. Bill is retired. मतलब क्या? Drawee makes the payment before the due date. Now when drawee makes the payment before the due date, he may ask for some kind of discount from drawer, correct? Which we debit it to rebate account and credit it to rebate account in the books of whom? Rebate account किसके लिए लॉस होगा? कुछ ड्रॉर के लिए, क्योंकि उसने जल्दी पैसे रिसीव किए तो वो अलाउ कर रहा है ना डिस्काउंट. And for drawee, this rebate will be discount received, so it will be credited. Renewal of a bill and retirement of a bill में कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए. अब वेदर बिल रिन्यू हुआ या डिसऑनर हुआ, नया बिल जो है, न्यू बिल जो है, वो आफ्टर सम टाइम ही होगा. देखो, पहले लीगल ड्यू डेट को या लीगल ड्यू डेट से पहले हमने पहले वाला बिल कैंसिल कर दिया, ड्रॉई ने कैंसिल कर दिया आइदर लीगल ड्यू डेट को या लीगल ड्यू डेट से पहले. क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट हैव द मनी टू पे. Now when the new bill is, it cannot be immediately, no, after 2 days or 3 days. So he will ask for extra time. So for this extra time, it will be the fundamental right of the drawer to charge interest to drawee. Fundamental right. Drawer will charge interest to drawee. हाँ, ये जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉर का हमेशा इनकम है और ड्रॉई का हमेशा एक्सपेंडिचर है. And this interest amount is over and above the bill amount. So it is not the part of bill amount, obviously. It is extra. अब क्या है ना, फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया है या रिन्यू हुआ है, कैंसिल हुआ है बिफोर द लीगल ड्यू डेट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट ड्रॉई पेज टू ड्रॉ. दैट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ द बिल अमाउंट. एंड उसी टाइम पे वो जो भी इंटरेस्ट नक्की करेंगे वो इंटरेस्ट ऑल्सो कैन बी बाय ड्रॉइंग टू ड्रॉ. सो पार्ट पेमेंट के साथ भी इंटरेस्ट पे किया जा सकता है बाय ड्रॉइंग. तो ड्रॉअर के लिए पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट रिसीव किया जा सकता है. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, लेट अस से द बिल ओरिजिनल बिल अमाउंट इज 8. Bill was cancelled on the due date, dishonored on the due date. 3,000 was paid immediately by drawee to drawer, but only 3,000 which is part of the bill amount and not part of the bill amount plus noting charges. I mean plus interest. Noting charges तो बात अलग ही है, वो तो ऑलरेडी डेबिट हो चुके. अब क्या होगा?
जो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा फॉर 3 मंथ्स, लेट अस अज्यूम दैट न्यू बिल विल बी फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, वो ड्रॉई ने ड्रॉर को पे नहीं किया, यानी वो भी पेएबल बनेगा, वो भी रिसीवेबल बनेगा. पेएबल फॉर ड्रॉई, रिसीवेबल फॉर ड्रॉर, एंड ऑब्वियसली इट विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट न्यू बिल अमाउंट. अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं. आई एम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर and I'm in the books of drawing. Pehले in the books of drawer for cancellation of the bill on the due date, we will pass the entry drawings account debit 8,000 to bills receivable account 8,000. What entry drawing will pass bills payable account debit 8,000 to drawers account 8,000. इसके साथ पार्ट पेमेंट आया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 to drawings account 3,000. Drawers account debit 3,000 to cash or bank account 3,000. अब कहानी में ट्विस्ट है. ड्रॉर के बुक्स में ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हुआ था बाय 8,000, उसके बाद ड्रॉई का अकाउंट क्रेडिट हुआ था बाय 3,000. सो ड्रॉइज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ओनली 5,000. ठीक है. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, drawers account was credited by 8,000, then it was debited by 3,000. So drawers account is having a credit balance of only 5,000. What it means is, in my books, as a drawer, I am saying drawing से receivable है सिर्फ 5,000. And in the books as drawing, I am saying drawer को payable है only 5,000. Let us say the interest amount for 3 months is 100 rupees, which is not the part of part payment. 3,100 was not paid. So 100 rupees interest was not paid, and it is receivable for drawer and payable for drawing, and it will be the part of the new bill amount. Now, the blunder committed by many of the students is they directly pass the entry bills receivable account debit 5,100 to drawings account 5,100, and they bindas pass the entry. They leave the examination hall without any fear, because the problem says that the new bill is bill amount plus interest. So barabar hai 5,100. Balance amount is 5,000. Interest amount is 100 rupees. I tell you. Yeah. You have passed this entry. This entry itself is not wrong, but this entry, me passing now, becomes wrong. Because in the books of drawings account is having a debit balance only of 5,000. If he is my debtor by 5,000 according to the books, how can you draw a bill on him of 5,100, and how will he accept the bill of 5,100? But has he accepted the bill of 5,100? Yes. Yes. Because the problem says that the new bill amount is bill amount, balance amount plus interest. So balance amount was 5,000, interest according to my example was 100 rupees. So is the new bill amount 5,100? Yes. सर आपको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आप बोल रहे हो न्यू बिल अमाउंट 5,100, फिर आप एक्साइट होते हो और बोलते हो ये गलत है. ये गलत है, क्योंकि ही इज माई डेटर ओनली बाय 5,000 and I have drawn a bill on him of 5,100. That's impossible. That's why you cannot pass the entry for the new bill amount. First you will have to pass the entry drawings account debit 100 to interest account 100, so that
he will become your debtor by 5,100. हाँ या ना? Similarly, in the books of Roy, you will have to pass the entry interest account debit. Interest account debit to what? Drawers account. तो क्या होगा? ड्रॉर क्रेडिट, ड्रॉर डेबिट, ड्रॉर क्रेडिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा 5,100. And now we can definitely pass the entry for the new bill amount. That is bills receivable account debit 5,100 to what? Employees account 5,100, and here drawers account debit 5,100 to bills payable account 5,100. समझे या नहीं समझे? इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को एक रूल बना के दिया. नाउ आई हैव एक्सप्लेन द लॉजिक क्विकली. यू मे रिविजिट द सेम वीडियो टू अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. 8,000 रुपये ओरिजिनल बिल अमाउंट था. बिल डिसऑनर हो गया. पार्ट पेमेंट हुआ 3,000 का. 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा. 3 महीने का 100 रुपीज इंटरेस्ट होता है. वो पार्ट पेमेंट के साथ पे नहीं किया गया था बाय ड्रॉई टू ड्रॉर, तो ड्रॉर ने ड्रॉई से रिसीव भी नहीं किया था, तो इट विल बी रिसीवेबल फॉर ड्रॉर, पेएबल फॉर ड्रॉई, सो इट विल बी पार्ट ऑफ न्यू बिल अमाउंट. द स्टूडेंट्स कमिट्स अ ब्लंडर ऑफ दे डायरेक्टली पास द एंट्री पार्ट पेमेंट के बाद फॉर द न्यू बिल अमाउंट. अवॉइड करना है. उसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल रूल फॉलो करने का. व्हेनेवर क्या whenever you are doing bill of exchange problem, you before starting the problem only should ask yourself, second bill है क्योंकि पहला बिल या तो ड्यू डेट के पहले कैंसिल हुआ या ड्यू डेट को डिसऑनर. ऑनर डिसऑनर वी यूज इट ऑन द लीगल ड्यू डेट. उसके पहले कैंसिल हुआ तो वी से कैंसिल, दैट इज रिन्यूअल. सो अगर हमारा पहला वाला बिल कैंसिल हुआ है या डिसऑनर हुआ है तो नया बिल का तो जन्म हुआ ही है. तो हमको पहले से मालूम होना चाहिए नया बिल का जन्म होगा तो नया बिल में सिर्फ बैलेंस अमाउंट है कि बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन एग्जामिनर देगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे. सो आपको पहले से मालूम होना चाहिए क्या? इफ क्या मालूम होना चाहिए? इफ द न्यू बिल अमाउंट, इफ व्हाट? द न्यू बिल अमाउंट. प्लीज ध्यान देना. इफ द न्यू बिल अमाउंट दैट इज 5,100 includes what? Interest amount. Which amount? Interest amount. Then we must first pass the entry for interest receivable in the books of drawer, interest payable in the books of drawing, you can see, and then pass the entry for the new bill amount. Things are there in front of you. I don't want you to mug up this tool. I want you to understand. पॉइंट क्या है? नया बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो आप पहले न्यू बिल का एंट्री पास नहीं करेंगे. आप पहले किसका एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इंटरेस्ट पेएबल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, एंड उसके बाद यू विल पास द एंट्री फॉर द न्यू बिल. सी, यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रगल टू पास द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ अ बिल दैट इज ऑफ 8,000 और 8,000 प्लस नोटिंग चार्जेस होंगे. तो यू आर नॉट गोइंग टू स्ट्रगल टू पास द एंट्री फॉर द पार्ट पेमेंट डन. उसके बाद डायरेक्टली यू विल फॉलो द ट्रैप विच इज लेड बाय द एग्जामिनर. दैट इज, यू विल टॉक अबाउट द न्यू बिल अमाउंट विच इज बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, एंड देन यू विल डायरेक्टली पास द एंट्री फॉर द न्यू बिल अमाउंट, जो नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. Not all. So
सिंपल लॉजिक है, नया बिल का एंट्री पास करने से पहले आपको इंटरेस्ट का या तो रिसीवेबल का एंट्री पास करना पड़ेगा या रिसीव्ड का। पुराना बिल से नया बिल के पास जाएंगे तो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड आएगा तो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट या तो रिसीव्ड होगा या तो रिसीवेबल होगा। पेड होगा या पेएबल होगा। सो नया बिल का एंट्री पास करने से पहले या तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री आपको पास करना पड़ेगा या रिसीव्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखो भाई, ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है। फर्स्ट बिल रिसीवेबल, फर्स्ट बिल्स पेएबल 8,000 खत्म। पहला बिल डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट, नोटिंग चार्जेस 500 था, पार्ट पेमेंट था 3,000 और न्यू बिल का अमाउंट था 5,800 including interest of 300. Okay, so the story goes like this, and we start from dishonor entry. So dishonor entry will be what? For drawer. B is account debit 8,000 500 to bills receivable account 8,000 to cash account 500. What entry Mr. B will pass for the same? Bills payable account debit 8,000. Noting charges account debit 500 to his account 8,500. उसके बाद पार्ट पेमेंट हुए, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 to B's account 3,000. This does not include interest or noting charges, and B will pass the entry A's account debit 3,000 to cash or bank account 3,000. अब बात ऐसी है कि 8,500 was B's account debit here, and here it was credited by 3,000. 5,500 तो आपको बैलेंस है ही, बट द न्यू बिल अमाउंट इज 5,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आपको क्या बोला मैंने, हमेशा नया बिल का एंट्री पास करने से पहले इंटरेस्ट का एंट्री आना चाहिए, या तो रिसीव्ड का या रिसीवेबल का। हियर रिसीव्ड का सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यू बिल। Any amount which is part of the new bill amount is not received by us, no, it is receivable. So in that case, we should now first pass the entry for what? Interest received. So my entry would be B's account debit 300 to interest account 300.
अब देखो आप, 8,500 डेबिट माइनस 3,000 क्रेडिट गिव्स यू 5,500 का डेबिट प्लस 300 का डेबिट मेक्स इट 5,800 का डेबिट. So he becomes my debtor by 5,800. So I can definitely pass the entry for the new bill amount. What entry Mr. B will pass? Interest account debit 300 to A's account 300 and बोलो A's account debit 5,000 to bills payable account 5,000. Understood? Understood. हाँ, यहाँ पे हमने वही पॉइंट रिपीट किया जो लास्ट टाइम रिपीट किया था कि नया बिल का एंट्री पास करोगे तो उसके पहले 100% आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल रिसीव फॉर ड्रॉर इंटरेस्ट पेएबल पेड फॉर ड्रॉई पहले पास करना है. अब सेकंड बिल में भी कहानी में ट्विस्ट है. बिफोर द ड्यू डेट दे से बी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. So if B has been declared insolvent, will he in a position to pay? Will he be in a position to make the payment against this bill full amount? So सबसे पहले in the books of A as well as in the books of B, we will have to pass the entry for cancellation of this bill. So what entry A will pass? B's account debit 5,800 to bills receivable account 5,800. And what entry Mr. B will pass? Bills payable account debit. He knows that he will not be in a position to honor the bill, right? As soon as he has been declared insolvent. His account. Now, इसके बाद they will tell you कि he has been declared insolvent, but जरूरी नहीं है कि zero amount you will collect from him. So they may tell you 50% amount we have recovered. So bank account debit. Forget 50%. They said we could recover 3,000. So the balance we are never going to receive. He was our debtor. Now he has become bad debtor. It was our debt. Now it has become bad debt. 2,800 to B's account 5,800. Here what entry we will pass? A's account debit 5,800 to bank account 3,000 to deficiency account 2,800. Why deficiency? Because we cannot pay. चलो भाई लोग जनरल नॉलेज गप्पा हाँ डिस्कशन अबाउट द चैप्टर वाव पॉइंट्स ये सब हो गए. Ultimately in the examination hall I am talking about bills of exchange. मेन क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स के लिए which I am expected to complete in maximum 20 minutes. What are the various permutations and combinations they can journal entries, only draw, only drawing, drawer plus drawing. Now, if they are journal entries,
and लेजर अकाउंट्स, उसमें क्या होगा, जर्नल ऑफ ड्रॉर में हम ड्रॉइज लेजर अकाउंट बनाएंगे एंड बोलो journal entries in the books of drawing, we will prepare drawers account. मतलब they can ask this only, they can ask only this only, or they can ask both also. Be careful. यहां तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सिर्फ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर वेरी लकी, सिर्फ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग सुपर लकी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग स्टिल no problem. Even if they ask you to prepare ledger account in the books of drawings account and in the books of drawers account, both, yeah, anyone, still no problem, because you see entries का posting करना. You have to be extremely careful when they ask journal entries in the books of drawer and they ask you to prepare drawers account ledger, यानी in the books of whom? In the books of drawing. So आप ये सोचेंगे खाली जाओ ड्रॉअर का जर्नल एंट्रीज आता है, ड्रॉइंग नहीं आता तो भी मैं बच गया, बचा नहीं है. इसमें ड्रॉइंग का एंट्रीज आना चाहिए तो उसका लेजर पोस्टिंग ड्रॉअर के अकाउंट में होगा ओरली. I am not saying this is difficult, but it can be asked this way also. So you have to be careful कि लेजर अकाउंट किसका पूछ रहे हैं. Similarly, they will ask you journal entries in the books of drawing, right? They will ask you to prepare drawings account ledger, obviously in the books of जो एंट्री पूछा ड्रॉइंग में, लेकिन ड्रॉअर के बुक्स के भी एंट्रीज मालूम होनी चाहिए. One more thing which I keep on saying in every damn single problem that we solve, bill of exchange, around 20-25 problems we have solved in class. Yeah. If the problem start with A draws a bill on B, that means B A का कौन है, डेटर है, ये उसका कौन है, बोलो, क्रेडिटर है. तो ये बिल ड्रॉ किया गया. सो whenever you sit to prepare in the books of A B's account, before you do any kind of ledger posting, सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस. एंड सेम थिंग इन द बुक्स ऑफ बी, व्हेन यू प्रिपेयर एज अकाउंट, वो उसका क्रेडिटर था तो उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे. हाउ डू यू रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट दिस? वेरी सिंपल. नो, जब मैं ए के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करूंगा ना, तो बीच में रिकॉर्ड कर दूंगा बीज अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ whatever is the bill, and in the books of B is account credit balance of so and so, matter ends. This was the last thing that I wanted to discuss with you. It is never enough, but this is more than enough to remember, so that you can easily attempt one full question which will give you full 10 marks.
Apart from that, of course, on bills of exchange chapter, you can get a objective type question में question number 1 में format of bill of exchange or some objective 1 or 2 questions on bills of exchange. All that is part of your notes of our classes. Every MCQ with answer explanation is there. Yes, guys? I am not covering up MCQs as such, but I did discuss what can come and how you are going to deal with it. It's a sincere attempt that, in minimum time, I touch and do discuss all small as well as important points of the chapter. More to come to give you comfort. All the videos will be available on YouTube. If you like the video, please share, give us recognition, all that bullshit. I'm not here to talk. I'm not YouTuber in this, preparation of video. The only intention is if you're revising the chapter a few days before the exam or 1 day before the exam, you should have everything at a glance. That's all. Yeah. Bye. See you in the next video on next chapter. Well, I'll be starting next chapter, admission, followed by retirement of a partner, followed by death of a partner. Bye.